Good afternoon to everyone. How is your Saturday playing out? I think it's too soon to say anything, right? I hope I'm visible as well as audible. Good afternoon. Good afternoon. I hope you guys can see me, hear me clearly. Please give me a confirmation in the chat box. Hi, Aishwarya. How are you? So, anything that you've planned for the weekend? Good afternoon, Samiksha. Okay. So, something that keeps you going and something that keeps you excited. I hope so, Aishwarya. All right. I hope you guys are ready for the Hindu editorial analysis. By the way, uh, do let me know if you want me to cover any specific part in any specific way that I can incorporate in the upcoming sessions. I would be more than happy to, listen to you guys if it is something productive and something that, allows us to learn more and new things. सो डू लेट मी नो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है इस हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में ठीक है सो ऐश्वर्या आई एम फाइन हाउ आर यू लाइक अच्छा यू आर आल्सो फाइन ग्रेट गुड टू हियर दैट सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास राइट okay I hope my screen is visible. And yes, the agenda is pretty similar to yesterday's. We are going to discuss high frequency words. We are going to do the analysis of one particular article. And this time I picked something which is something which we haven't done so far because generally it's a political commentary और कुछ ना कुछ current affairs से related ही चीजें होती हैं जो हम article analysis में discuss करते हैं. But today I saw a passage which is based on scientific research. So मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक नया genre explore करें today. ठीक है? So let's start with the first high frequency word. And it's not really a word, it's kind of like a phrase, to be honest, but it's put in the category of noun only, and it's known as a paradigm shift. Okay, so paradigm shift is a very frequently seen, frequently used phrase. तुम लोगों ने देखा ही होगा यहाँ वहाँ. और पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज. ठीक है, आप बोल सकते हो एक ड्रास्टिक चेंज जब किसी चीज में दिखता है आपको. इट कैन बी इन द वे पीपल बिहेव, इट कैन बी इन द वे थिंग्स आर डन. For example, if there is a paradigm shift in terms of policies, that means कुछ बड़े changes आ रहे हैं in the upcoming, आप बोल सकते हो political agenda. So that is known as a paradigm shift. Good afternoon, Drishti. Just saw your message. So let's see how we can use it. So the discovery will bring about a paradigm shift in our understanding of evolution. That means the discovery will play a very considerable role in order to understand evolution. अभी तक बहुत सारी theories and बहुत सारे researches हुए हैं, but nothing concrete, to be honest, can be said when it comes to how the origin of Earth happened, right? तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ऐसे paradigm shift की. Similarly, after I talked to my mentor or after I talked to my guru, there was a paradigm shift in the way I started thinking about things. Okay. Similarly, after meeting my stylist, my fashion sense saw a paradigm shift. That's how we can use it. Hi, Aryan. I hope you haven't missed anything. So let me write an example here. After meeting my stylist, my fashion sense saw a paradigm shift. Okay, use it in your own examples, which I'll read it out later. The next one is, I don't know whether you guys have already seen this word before, realpolitik. Okay, and this is another noun. And politik से तुम लोग pick तो कर चुके होगे ये hint कि it's related to politics, right? तो अब बात करते हैं कि किस तरीके के सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात हो रही है. So it's basically the kind of politics which is based on practical rather than moral or ideological considerations. What does that mean? इसका मतलब ये है कि आप उसका pragmatic या practical approach उस पे ज़्यादा focus करोगे कि how a particular policy can affect people, not affect, can affect people. And यहाँ पे आप कहीं भी
एक यूटोपिया में नहीं जीना चाहोगे. You wouldn't want to understand the moral implications or the ideological considerations of things. यहाँ पे आप ज्यादा concerned रहोगे कि practically how this situation is going to play out. ठीक है. Yes, Aishwarya, absolutely. It means a drastic change. Okay? So let's see how we can use it in a sentence. Realpolitik, okay? Diplomacy and realpolitik continue to fascinate him. That means both. ये दोनों भी जो चीजें हैं, ये qualities होती हैं of a person who wants to go in the political field, right? They love to be diplomatic and they love policies which are based on pragmatic approach. ठीक है? So, let me read Drishti's example here. After Corona, everyone has seen some sort of paradigm shift. Absolutely, Drishti. And moving to the next one, burgeoning. I think this is one word which probably you must have discussed with Shazli ma'am also. ये बहुत ज़्यादा हिंदू एडिटोरियल में देखने को मिलता है. और कोई भी चीज़ अगर burgeon हो रही है, यानी कि it's basically beginning to grow or increase rapidly. It's flourishing very quickly. It's thriving. It's increasing in quantity, and that is burgeoning. Okay, and this is an adjective. So you'll generally see this word with a noun, and do not get confused seeing the ing, because I might have told you before also, not necessarily every ing word is a verb. ठीक है. कुछ ing words जो होते हैं वो gerunds होते हैं, which behave like nouns in a sentence, और कुछ ing words होते हैं participles which behave like adjectives in a sentence. तो यहाँ पे you can see this is actually an example of present participle, also known as an adjective in a sentence. ठीक है. तो यहाँ पे let's see the usage of this particular word. The injury destroyed her burgeoning career as a dancer. That means she must be really flourishing in her dancing career, but then the injury took everything away from her. Okay. Similarly, the burgeoning inflation has made my pockets empty. I think this is one thing that you should ask your parents, and they'll tell you how the inflation is affecting them. Okay? And parents of sports players had a paradigm shift towards their kids on playing online games to earn the bread in a young age. Exactly, Aryan. And I think the parents who encourage that, they shouldn't, because भले ही चलो ठीक है, this is a source of income, but it's kind of hampering the minds of these young kids. तो ये नहीं होना चाहिए वैसे तो, but what can we do about it? The way we think about problem solving is undergoing a paradigm shift. Absolutely, Aishwarya. Lovely example. The next one is truce. Again, a word which you might have seen in legal documents or legal analysis. Truce का मतलब होता है when you temporarily stop fighting. Okay, for example, you have an enemy और उससे आपने temporarily लड़ाई करना बंद कर दिया है. ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे it is an agreement between enemies or opponents. It could be between two countries who are in a state of conflict. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है. And it could be two enemies in general, and they have stopped fighting for that time period. So that is a truce. And then the usage. The priest helped to negotiate a truce between the warring sides. Generally, पुराने ज़माने में kingdoms के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, and the priest used to act as a mediator and used to solve the problems between the two kingdoms. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये priest की वजह से ही these two parties, these two warring sides have temporarily stopped fighting. Okay. I called for a truce when I saw the matter getting out of hand. Right? So currently the use of social media is burgeoning, many, which resulted in many people to become social media addicts. Absolutely. I think even though
We might not admit, but most of us are social media addicts, right? Burgeoning number of students in higher education reflects improvement in our education system. You can even use reflects a paradigm shift in our education system, Komal, right? So that way you'll be able to use two new things that you have learned. Now, let's see the next word. Acquittals. And acquittals is related to a judgment. Basically, you are freeing somebody. अगर किसी पे कोई इल्जाम लगा हुआ है, somebody who has been accused of a crime of something, you are giving a judgment which proves that they are not guilty. You are providing a judgment or a verdict that a person is not guilty of the crime with which they have been charged. तो एक तरीके से you are letting them go, you are letting them or setting them free, in simple words. Teachers, thank you so much. Comments like these can kind of, obviously it can make anybody's day, so thank you so much for that. And I just hope that whatever we, on a general basis, whatever we interact, it's kind of acting as useful in your daily life. So coming back to acquittals, acquittals का मतलब होता है जब आप किसी accused person को उसके crime से basically बाइज्जत बरी कर देना, in Hindi we call that, and it's again another legal term. तो आप किसी को ये प्रूव कर देते हो कि दिस पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं था उस चीज में, ठीक है. सो लेट्स सी द यूसेज. सेवरल jurors voted for acquittal. That means they were voting for a judgment where it sets a person free from guilt. Okay. The next one is ramifications. Again, another common word. So to be very honest, when I was your age, I used to come across this word very often. But कभी भी मुझे इच्छा नहीं होती थी इस word का meaning देखने की. But बाद में पता चला कि यार इसका meaning तो बहुत ही simple है, and I can actually use it in my everyday, language. So ramifications का मतलब होता है a complex or an unwelcome consequence. किसी चीज का एक बुरा consequence, बुरा result. आप बोल सकते हो एक bad effect of something can be considered as a ramification. And in general also इसका context एक तरीके से effect बोल सकते हो या outcome बोल सकते हो of a certain action. That's how we can use this. Good afternoon, Ragini. And Samiksha has given us another example. Many other people have been acquitted of crimes to which they have later admitted. Exactly, Samiksha. And the first name that comes to my mind, although that person hasn't admitted anything, but what do you guys think about Salman Bhai? Salman Bhai. मेरे ख्याल से तुम लोग relate कर सकते हो इस चीज से. He has been acquitted for several accusations, right? Acquittal of innocent person is one of the purposes of fair justice. Very good, Komal. So, have you considered all the ramifications of your suggestion? Have you considered all the after effects or consequences or outcomes of your suggestion? Okay, let's use another example here. The ramifications of a rude remark can create lifelong enmity. So I think you guys can actually relate to this. जब आप किसी को कोई बहुत ही rude remark या comment करते हो, so obviously you kind of ruin the other person's probably self-esteem or maybe their mood, and they might hold that grudge against you forever, and they might never talk to you. So that is how you need to be very careful when it comes to using the right words. ठीक है? And yes, Sanjay Dutt is another example, Vaibhav, absolutely. नहीं, तुम नहीं सलमान, तुमने भी कोई क्राइम किया है क्या? Playing cruel online games has ramifications on teens. Has, I would say, negative ramifications on teens. Sanjay Dutt has criminal charges on him, but court has acquitted him.
use it like that, acquitted, use the verb version of it. And then वही मैं बोल रही थी धनंजय, इट्स सैल्मॉन। मैंने सैल्मॉन भी देखा है, सैल्मन भी देखा है, तो आई थिंक पीपल आर वेरी क्रिएटिव विथ हिज नेम। So coming back to the next word, percolate. And percolate generally used hota hai when you're filtering out something. Okay. Generally, you might have seen people filtering out their coffee. So that is how we use it, filter or drip. And usage is I left the coffee to percolate. I left the coffee to filter out. The conversation percolated later in my head. And then I realized the ramifications of it. I've used two words here, right? Ramifications of these ongoing wars are really a threat for geopolitics and diplomatic relations. I think I couldn't agree more, Komal. And Samiksha's example is the ramifications of this one, if it goes all the way, are huge. Yes, that means the consequences are going to be huge. Probably you might regret it later. The use of steroids will have its ramifications on power lifters if they hop on gear. Absolutely, Aryan. And I think nobody should actually be on steroids. It's kind of addictive, but because you look good, but the thing is, the aftermath is kind of scary. The next word is pertaining. Pertaining बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बट पता नहीं लोग क्यों इसका मीनिंग नहीं ढूंढते हैं। pertaining का मतलब होता है समथिंग which is related to something, ठीक है? For example, matters pertaining to workplace should not be discussed at home. How many of you agree that जो भी workplace में होता है and the things that you go through in your workplace should never be discussed in the confines of your home, because home is a separate territory whereas office is a separate territory, right? So matters relating to workplace, instead of using the word relating or related, start using the word pertaining instead. Okay, it's better to percolate the situation before it leads to any misunderstanding. I used to drink percolated water. Okay. The light from the rising sun has started to percolate the dark forest. And Aishwarya, I hope you know the term for this. When light starts to percolate through the dense forest, it's known as a canopy. Pata hai ki nahi? Rumors percolated throughout the town. Very, I would say, very impressive, Samiksha. And let's see how can we use pertaining. The colors pertaining to this artist, or the color scheme pertaining to this artist, is never predictable. No problem, Aishwarya. You've learned something new, right? The next one is appellate. An appellate court, you might have heard of that before. Just a second, let me erase this. Okay. So an appellate court, उसका मतलब ये होता है court which is related to, which pertains to recognizing appeals. लोग अपील करते हैं ना, तो इस कोर्ट में, appellate कोर्ट में, ये appeals ही डिस्कस होती हैं, ठीक है? In my opinion, maths is pertaining with stress. Okay, sorry, Drishti, that's one way to put it. I think मेरे ख्याल से तुम उतनी ही ट्रॉमेटाइज्ड हो मैथ से जितनी मैं हुआ करती थी back in the day. So, if the appellate court finds no defect, that means the court which deals with appeals, recognizing appeals, if it does not find any defect, then it affirms the judgment. इसका मतलब है then it will go with the judgment, or it will confirm the judgment. Okay.
Another example, I think you guys must have noticed that this is an adjective. So please remember here, an adjective will always be talking about a noun. So the same way here also we are talking about a noun. Okay, it's qualifying a noun. Okay. Such questions pertaining to the present or future most most human beings. हाँ, ठीक है. Secrets pertaining to defense of a country must never be revealed on public platforms. Psychology is pertaining to mind. Absolutely. Great examples. The appellate court or the appellate judge denied the acquittal. So I have used this word as well as this word because both of them had legal context. So you can also kind of combine the two and use it in your own way. Okay. Then, time for the article of the day. And as I've already told you in the beginning, that today I thought कि हमेशा से हम politics या geopolitics या current affairs से related बात करते रहते हैं. तो why not change the genre a little bit? So today's article, first of all, let's discuss the genre. It's a scientific research. You can even call it an academic analysis. Okay. The Supreme Court serves as the highest appellate court in the country. Wonderful example. Appellate courts have power to issue writ of prohibition. Again, another lovely example by Komal. Well done. So moving to what's going on here. तो मैं क्योंकि तुम लोग मेरे ख्याल से जब इस पैसेज को पढ़ोगे या इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्टीज आए फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज इट्स साइंटिफिक research and it uses the jargon of science. Jargon का मतलब होता है the technical language which is used in science. And generally people who do not come from science backgrounds, they might find it a little, I would say, edgy. बट कोई बात नहीं, हम इसको सिंपलेस्ट वर्जन में समझने की कोशिश करेंगे कि बात क्या चल रही है. ठीक है. एंड जहाँ पे भी तुम लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज यू कैन कट मी शॉर्ट एंड आई कैन री एक्सप्लेन दैट पार्ट. ठीक है. तो चलो बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ, डिकोडिंग द स्क्रिप्ट ऑन द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एंड इट्स सीक्वेंसिंग 10,000 इंडियन जीनोम्स. पहली बात तो कोई मुझे बता सकता है कि जीनोम्स का मतलब क्या होता है? किसी को भी पता है या पहली बार ही सुन रहे हो? यार पहली बार तो नहीं सुन रहे होगे, यू माइट हैव स्टडीड दिस इन बायो. बट अगर नहीं पता है तो वो भी बता दो. Of course, I'm going to start from there. So let's try to understand that genome is kind of like a puzzle. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि imagine you have this massive puzzle and each person's body is like a piece of that puzzle. कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास ये एक बहुत बड़ा सा पजल है और इस पजल के जो पीसेस हैं वो कौन है? हर इंडिविजुअल की बॉडी. ठीक है. सो पीस ऑफ द पजल, इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी. ओके. और उसी पजल का पार्ट है ये जिनोम. अब ये जिनोम होता क्या है? इट्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए बोथ एंड इट्स कंसिडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि उससे पता चलता है कि हाउ ह्यूमन बॉडीज ग्रो, इवॉल्व एंड फंक्शन. यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? डू लेट मी नो. कोई बात नहीं आर्यन, इट्स ओके. बट अभी तक जितना मैंने समझाया क्या वो समझ में आ गया? दैट यू हैव अ जायंट पजल. उस पजल का एक पीस, हर पीस जो है वो क्या है? वो ह्यूमन बॉडी है. और उस ह्यूमन बॉडी का भी एक छोटा सा पीस है विच इज जिनोम. और जिनोम जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए. डीएनए आपने पढ़ा होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड.
तो इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन इज बेसिकली योर जिनोम, ठीक है। एंड जिनोम इज कंसिडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। दैट मीन्स वो आपको बताता है कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो उसके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस क्या है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। नाउ द थिंग इज, the scientists have been very interested in this particular subject matter, and they have recently finished studying the genomes of 10,000 people. और ये 10,000 people कौन है? इंडियन पीपल हैं ये, ठीक है। So 10,000 इंडियन जीनोम्स को स्टडी किया गया है by the scientist. Now the thing is, it's kind of like 10,000 pieces of a puzzle, but obviously you have a big picture. Big picture में आ जाएगा आपका what an average Indian genome looks like, ठीक है। तो हमें ये समझ में आता है कि 10,000 इंडियन जीनोम्स अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने स्टडी किए हैं। नाउ द थिंग इज, अगर हम 10,000 जीनोम्स के बारे में सोचें तो इट माइट साउंड लाइक अ लॉट, राइट? बट व्हेन वी काइंड ऑफ सी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन ही बिलियंस में है, तो फिर ऐसा लगता है कि ये तो बस बहुत छोटा सा सैंपल है, इजंट इट? क्योंकि बिलियन का 1/10 पार्ट भी नहीं होता है 10,000, ठीक है। Now, however, it's a very good start because it will actually provide the scientist with the kind of foundation or the basic idea कि कैसे इंडियन जीनोम्स दिखते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिस्कवरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप बोल सकते हो कि इंडिया में है बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट हिस्ट्रीज, एंड उनमें बहुत सारी चीजें शायद कॉमन नहीं है। So that's the reason when we study these genomes, it's actually going to help the scientist understand about diseases which people from different histories, people from different backgrounds bring forth. इससे आप लोगों के अंदर जो डिजीजेस हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जिनोम में कॉमन तो नहीं है, ये पता लगाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इट विल ऑल्सो हेल्प देम टू अंडरस्टैंड हाउ इट अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय में बेसिकली दे आर थिंकिंग इन अ वेरी विजनरी वे, क्योंकि आने वाले समय में हम पहले ही पता लगा लेंगे कि इस पर्टिकुलर जिनोम में ये डिजीज होता है, तो इसका जो आप बोल सकते हो काउंटर आर्ग्यूमेंट, या आप बोल सकते हो एक काउंटर अटैक हमारे पास ऑलरेडी रेडी रहेगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज, थिंक ऑफ इट एज अ पार्ट ऑफ अ डिटेल्ड मैप ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अगर हम बात करें, एक बहुत ही रफ आइडिया लें हम इस मैप का, तो हमें पता चलेगा कि स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर मैप हैज बीन टेलर्ड टू केटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ इंडियन जीनोम्स की ही बात की हुई है। इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम अ सिंपल स्केच टू अ वेरी डिटेल्ड पेंटिंग, ठीक है। आई एम यूजिंग सिमिलीज टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि बस यहाँ पे इतनी ही बात होती है, और बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं विच आई डिड नॉट रियली से, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू विल रीड इट यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। बट पैसेज में इतनी ही बात होती है कि 10,000 इंडियन जीनोम्स हैव बीन रिसेंटली स्टडीड बाय द साइंटिस्ट। द रीजन बिहाइंड दैट स्टडी इज प्रिटी सिंपल। दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ these genomes vary from one sample to another, एंड उससे ये पता चलेगा कि डिजीजेस कैसे फैलती हैं, क्या उन डिजीजेस के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। So all of this has been taken into account for this research. अब यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क। All good? चलो, now let me tell you about these words that I have highlighted. Akin, अभी हमने एक word पढ़ा था pertaining. Pertaining and akin are very related to each other, and also it tells us the meaning. Akin का मतलब होता है related to. What's the meaning of akin? Related to. Pertaining, related to. So we have practically learnt two synonyms. ठीक है? Akin and pertaining. Devoid, if you are devoid of something, for example, because of my upcoming final exams, my life is devoid of fun. I want you to understand the context and tell me the answer. क्या होगा meaning devoid का? Because of the upcoming exams, my life is currently devoid of fun. Any idea? Lacking. Very good, Drishti.
So that's how you identify contextual meaning. हमेशा हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तुम लोगों को, बट वहां पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना. So exactly, my life is in dire lack of fun. My life is lacking fun, sorry. So moving to the next word, devoid of without. Exactly. There's another word for without, by the way. How many of you have seen the word sans? My life sans my spectacles, is painful. So another word for devoid without is sans. Okay, I love this word, by the way. The next one is endogamy. अच्छा, मोनोगैमी सुना होगा तुम लोगों ने, बाइगैमी सुना होगा. So you have this root word gamy, और gamy is related to marriages. तो कोई गेस कर सकता है क्या हो सकता है एंडोगैमी? एंड प्लीज डू नॉट रिलेट इट विथ एंड गेम, क्योंकि दिखने में वो काफी कुछ एंड गेम जैसे ही दिख रहा है. एनी आइडिया? So endogamy is again related to marriage only, but marriage within the same clan. मतलब कि मेरी ही सोसाइटी में मेरी शादी होनी चाहिए, उससे बाहर मेरी शादी नहीं होनी चाहिए. That is known as endogamy. Okay, marrying in a local community, exactly. The next word is awry. That's how we pronounce this word. Awry. And awry का मतलब होता है twisted, bent in shape. That means the way things should be, it's not in that same condition. ठीक है? Yes, one's clan. Absolutely, Samiksha. So यहाँ पे अगर कोई चीज awry है, that means it's going in a very twisted, nasty, or very weird, unusual way. That is awry. Okay? And debilitating, ये तो बहुत common word है, शायद तुम लोगों को पता ही है. Debilitating, if your disease is in its debilitating stage, that means you need to beware. It means slowly and steadily, or आप बोल भी सकते हो gradually, the disease is killing you, it's weakening you. So that is debilitating. My marks are currently in a debilitating state. That means it's getting weak by the day. Okay, the next one is realms. Realms का मतलब होता है a kingdom or a part of something, a land, ये भी हो सकता है. तो depending upon the context, that's how you can use it. ठीक है, opened up new realms, opened up new worlds. So worlds, kingdoms, ये मतलब होता है realms का. And locked up in the ivory tower. Any idea? If you are locked up in an ivory tower, by the way, please have a look at these words. Akin is related, devoid is to lack or be without something which is necessary or usual. Endogamy, the custom of marrying only within the limits of a local community. मैंने बोला था ना कि clan या tribe से बाहर जाके आप शादी नहीं कर सकते. Awry is wrong or twisted, something which is not the way it should be. Debilitating, something that tends to weaken. आप बोल सकते हो state of something. And realms is kingdom or worlds. The last one is locked up in your ivory tower, which is a metaphor, by the way. So it's a metaphor for what? For escapist tendencies. There are people who do not like to encounter reality because reality is disappointing. Trust me. आपको अपने, आप बोल सकते हो, इमेजिनरी फ्लाइट्स में रहना पसंद है, आपको रियलिटी पसंद नहीं है. सो इट इज काइंड ऑफ एन इम्प्रैक्टिकल, ऑफ एन एस्केपिस्ट एटीट्यूड. आप भागना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम से, और आप भागोगे कैसे? जब आप अपनी इमेजिनेशन या फैंटेसी में रहोगे. ठीक है, सो कोमल, यू हैव गेस्ड इट राइट. अनअवेयर ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ, somebody who does not have any concern or interest in practical matters or urgent problems. Such people are known to be in their ivory towers, known to be locked up in their ivory towers. So use it as a metaphor for people whom you can relate this particular metaphor with.
मेरे ख्याल से होगा कोई ना कोई जिसको तुम जानते होगे, जो हमेशा इमेजिनेशन में ही जीता है, उसको रियलिटी पसंद नहीं होती। सो मेन आइडिया क्या होगा इस पैसेज का, मैंने समझा दिया है। नाउ आई वांट द आंसर फ्रॉम यू गाइस। बताओ, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज? I'll wait. So we were talking about a scientific research, and this research is about studying 10,000 genomes. And ये किसके 10,000 genomes हैं? Indians के. Now, what was the agenda behind this research work? The agenda is pretty simple. They wanted to see how these genomes, which are also known as the blueprint of humans, how these genomes evolve, how they are different from one in one individual from the other. And secondly, it will also give them a better opportunity to understand the diseases which pertain to an individual belonging to a certain history or a background. तो ये सारी बातें हुई थी मेन आइडिया में. So you can sum it up in your own words, right? And what is the tone? What's the tone of this passage? Was the writer taking sides by any chance? Okay, not concerning at all, Samiksha. No, no. He wasn't concerned about it. He's actually happy about it. So it was primarily informative. And what else? Informative, and you can even call it a part of academic paper. So this could be the source. Factual, even expository. Okay. Yes, so this could be the main idea. So I've got another answer from Drishti. Research which is conducted to study the genomes of 10,000 Indian people so that they can cure any disease in upcoming future. Plus, it also tells us about how people are marrying in the same community, which can be very alarming. Absolutely, Drishti. Thank you so much for that. Now, I have kind of changed the quiz, the way we conduct the quiz because बहुत टाइम से हम लोग टोन्स ही डिस्कस कर रहे थे. मैंने सोचा कि एक और क्वेश्चन टाइप होता है and that is known as from which source has this article been picked. देखा ये क्वेश्चन टाइप? So I thought that we are going to discuss something new today by discussing the different sources. So I don't know whether you guys have already read this particular article, Change and Continuity in India's Palestine Policy. And if you haven't read anything about it, so let me give you a idea an idea about what's going on in this passage. तो ये जो है ये एक तरीके से आप बोल सकते हो it's talking about India's policy towards Palestine and Israel, and the main idea concerns India historically, how India historically supported Palestine, but has also developed closer ties with Israel over time. तो हमारे जो relations हैं वो इसराइल और पैलेस्टीन दोनों से ही अच्छे हैं. ठीक है.
Now, this passage also discusses how India's stance has evolved under different leaders. तो जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती है वैसे वैसे आइडियोलॉजी बदलती है और वैसे वैसे चीजें भी बदलती हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि डिफरेंट लीडर्स के अंडर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो भी काफी डिफर करता है. एंड दिस इज इन रिस्पॉन्स टू द जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स कि कैसे इसराइल के साथ हमारे रिलेशंस चेंज हुए, कैसे पैलेस्टीन के साथ रिलेशंस चेंज हुए, जस्ट बिकॉज आर लीडर्स वर चेंजिंग ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द एफर्ट्स जो इंडिया डाल रहा है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सपोर्टिंग पैलेस्टीन एंड फॉस्टरिंग रिलेशंस विद इसराइल. तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो दोनों के साथ ही अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चले. ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली उनका नेशनल इंटरेस्ट है. ठीक है, अगर एक के साथ भी रिलेशन खराब होता है तो कहीं ना कहीं इट्स गोइंग टू हैम्पर द प्रोग्रेस of our country. So they are trying to work to create a balance when it comes to feeding our own national interest and secondly regional stability when it comes to the Middle East. तो ये चल रहा है पैसेज में. अब कोई मुझे बता सकता है कि what could be the source of such type of articles or reports? Oh, Naveen, thank you so much for that example. Percolating the facts by the social media influencer to gain views will have ramifications on youth. So you have used so many new words. Well done. So क्या ये archaeological data है? Archaeological data क्या होता है? When an archaeologist basically dig the ground and find something, ठीक है, और उसका जो आप बोल सकते हो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमेशा हिस्ट्री से रिलेटेड होता है. ठीक है, समथिंग विच हैज बीन बेरीड लॉन्ग बैक इन एंशियंट सिविलाइजेशंस, सो दैट्स रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल डेटा. तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है क्या, इतने पुरातन काल में हम जा रहे हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? Or historical analysis. So, although it does talk about the history of India's relations with Palestine, but other than that, history के बारे में बात नहीं होती है यार. सोचो तो जरा, हिस्ट्री के बारे में बस एक बार बात होती है कि पुराने समय में इंडिया के पैलेस्टीन के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे. ठीक है, और अभी आने वाले समय में अभी हम जो देख रहे हैं उससे इसराइल के साथ भी रिलेशंस हमारे काफी सॉलिड हैं. So it's a political commentary. Exactly. It's a political commentary, which is the answer. Very good, Drishti. The next one is India's burgeoning death penalty crisis. When I talk about this passage, I'm talking about, how India is facing a crisis when it comes to death penalty. ठीक है, हमारा कोई एक प्रॉपर स्टैंड हो नहीं पा रहा है इस चीज पे, बिकॉज विद राइजिंग नंबर ऑफ पीपल ऑन डेथ रो, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट फ्लॉज इन द लीगल सिस्टम, बहुत सारे लोग हैं जिनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है probably. So the passage discusses how there have been some efforts to change the reforms and to bring reforms basically when it comes to death penalty sentencing. And लेकिन जितने भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं ना ये बहुत इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सो एज ट्रायल कोर्ट्स कंटिन्यू टू इम्पोज डेथ सेंटेंसेस, और ये पता कैसे चलता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स आज भी डेथ सेंटेंसेस लोगों को दे रहे हैं. ठीक है, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर्स आर मिसिंग. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रेयर एक्विटल्स. रेयर एक्विटल्स का मतलब क्या हुआ, हाउ दे अलाउ सर्टेन पीपल फ्रीडम. ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो कहीं कहीं कुछ लोग हैं जो उनको छोड़ भी दिया जाता है, उनको फ्री नॉट गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है. ठीक है, which also kind of highlights the systemic failures कि how our system is failing overall, क्योंकि एक कोर्ट उनको डेथ पेनल्टी दे रहा है और दूसरा उनको बाइज्जत बरी कर रहा है. ठीक है, also the harsh conditions faced by the death row prisoners, क्योंकि obviously उनके क्राइम्स भी उतने ही ज़्यादा ऑब्वियसली बुरे होंगे, तो काफ़ी अंदर भी कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती, दे आर वेरी हार्श. तो उसके बारे में भी बात होती है यहाँ पे. एंड ओवरऑल इट्स आर्ग्यूइंग द करंट अप्रोच, द वे वी आर डीलिंग विद डेथ पेनल्टी इन इंडिया. एंड द राइटर काइंड ऑफ सजेस्ट दैट वी शुड एक्चुअली रीथिंक दिस, बिकॉज ये बहुत ही अनजस्ट और इनइफेक्टिव लग रही है सभी लोगों को. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज इट अ पॉलिटिकल डॉगमा? पॉलिटिकल डॉगमा का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, एंड तुम लोगों ने आंसर तो सही बता दिया है. वेल डन यू गाइस. द आंसर इज लीगल एनालिसिस. लवली. सो ऑल ऑफ यू गिव योरसेल्व्स अ पैट ऑन द बैक. पॉलिटिकल डॉगमा का मतलब होता है एक कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है. सो
everybody has to follow that ideology when that particular political party is in charge. So that is a political dogma. साइंटिफिक डेटा तो ऑब्वियसली नहीं था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने साइंटिफिकली इन डेथ्स को थोड़ी ना डिस्कस किया था. सो इट इज अ लीगल एनालिसिस. For CLAT, other than the newspaper, Ajay, you can go for magazines such as the Outlook, yeah, the Frontline, Open magazine आती है एक, Reader's Digest. You can go for that also. And other than that, there are websites which you can definitely explore. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा The Atlantic, The Guardian, Scientific American, फिर उसके बाद American Literature, Literary Hub. ये सारी websites हैं which you can definitely go and start reading from, because they have diverse topics, और diverse reading ही सबसे important part होता है to prepare for your CLAT examination. The more you read, the more accustomed you are to dealing with, very challenging, difficult tests. So सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना ज़्यादा read करोगे, जितना ज़्यादा you will come across new vocabulary words, उतना ही ज़्यादा you will find yourself at ease, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी. So you can start implementing all of those things. And time for the bonus question of the day. And please click a picture of this: vulnerable to criticism on the ED and a possible violation of federal principles. खुशी, अच्छा एक बात मैं बता देती हूँ. If you are somebody who reads the Indian Express editorials, तो फिर Indian Express के editorial से अपने vocabulary words choose करो. और अगर तुम हिंदू पे मूव कर चुकी हो तो फिर हिंदू ही सबसे बेस्ट है in that case. Okay, no problem, Ajay. So please click a picture of the bonus question. And by the way, तुम लोगों ने लास्ट वाले जो क्विज का आंसर बिल्कुल सही दिया था. And what was that? It was an authentic report. So you guys have answered it correctly, by the way. But there was another bonus question जो शायद उससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे सबने आंसर मेरे ख्याल से कुछ और ही दिया हुआ था. I don't really remember the answer, but I'm telling you what the correct answer is. So the correct answer was, it was a skeptical critique. ठीक है, तो जितने भी लोगों ने डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट था, शायद सबने मार्क किया था डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट. एक चीज मैं बता देती हूँ. When a report is descriptive, descriptive का मतलब ये होता है कि it will be fully loaded with adjectives, it will be fully loaded with literary devices. Literary devices का मतलब होता है simile, metaphor, imagery, personification. और अगर ये सारी चीजें तुमको नहीं दिख रही है उस description में, then you cannot really label it as a descriptive report. ठीक है, तो सब लोगों ने शायद डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट मार्क किया था, बट द आंसर वाज अ स्केप्टिकल क्रिटिक. स्केप्टिकल क्रिटिक का मतलब होता है अ क्रिटिकल एनालिसिस, बस. ठीक है, so I hope you are ready for the bonus question. So I would be awaiting your response in the comment box. Thank you so much for today's class, and I hope you all have a pleasant day. So thank you, bye bye, good day everyone, have a good weekend. Thank you so much, Drishti. Bye bye.